अच्छा यार, परसों मैंने एक वीडियो देखी ऑन सोशल मीडिया एज यूजुअल. इस वीडियो में एक मिडिल एज खातून उसको मार पड़ रही है. कुछ नर्सेज उसको चंडे मार रही हैं, बाल खींच रही हैं, उसको गालियां दे रही हैं. Turns out this is a lady who's been working in a hospital. Somebody accused her of blasphemy. और हम सब जानते हैं कि भाई ये इल्जाम ही काफी होता है. मॉब खड़ी हो गई, कुटना शुरू कर दिया. एक बंदा कैमरा लेके उसके मुंह में उसने दिया हुआ है ताकि वो अपने दोस्तों को बाद में जाके दिखाए कि देखो हमने कितने हम पक्के ईमान वाले हैं, देखो हमने इसको मारा है, इसको हम कत्ल कर रहे थे, इसको कुट रहे थे. Aren't we great? That woman somehow, by miraculous coincidence, managed to get out. Police came, got her out. But of course afterwards, इसके बजाय कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो कि इस औरत को कुट रहे थे, जिन्होंने कानून बतौर अपने ख्याल, जिन्होंने अपने हाथों में कानून ले लिया था, अपने हाथों में अपना समझा था कि उनका हक था कि एक औरत को कुटें, बगैर तहकीक किए, बगैर समझते हुए, बगैर कुछ कि इसको कुटें, इसको मारें, उसको कत्ल करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. लेकिन that lady, she is now saddled with a blasphemy allegation. A case has been filed against her. अब देखो, ये कोई नई बात थोड़ी है. ये तो रेगुलर बेसिस पे हमें ये इस तरह की शानदार मिसालें देखने में आती हैं. So what else can you expect? एक ऐसे माशरे में जहां पे गवर्नर का कातिल, जिसका काम था गवर्नर को महफूज रखना, उसने मुड़ के गवर्नर की कमर में 100 गोलियां मार दी और आधा मुल्क खड़ा होकर कहता है कि वाह वाह तू तो बड़ा ही ग्रेट बंदा है, उसको बहुत ही बड़ा हीरो समझा हुआ है, मज़ार बना दिया उसका. जिस माशरे में एक बेकसूर ईसाई औरत को 10 साल जेल में बंद रखा, उसका केस रेंगते मुश्किलों से दो उसके एडवोकेट, दो उसके लॉयर्स मारे गए, रेंगते सुप्रीम कोर्ट तक वो केस पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने बोले ये क्या है, को केस है, सबूत नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, इसको आजाद करो. व्हाट आर यू सेइंग? और जब इसके बजाय कि माशरा मुड़ के माफी मांगे कि हमने तुम्हारी जिंदगी के 10 साल छीन लिए हैं, नहीं, बाहर प्रोटेस्ट शुरू हो गए. उस औरत को छुपा के मुल्क से बाहर ले जाना पड़ा. और फिर जब बाहर गई तो ऊपर से सोने पे सुहागा लोग उसको ताने मारे कि तू निकली ना फिर वेस्ट इंड एजेंट, तू नाच गई फिर फ्रांस. हाँ पता है तुम्हारा, यही तो है, तू वीजे के चक्करों में थी. और जिन्होंने बाहर मार धाड़ की, तोड़ फोड़ की, क्या करें यार, वो ऐसे होता है. जिस माशरे ने एक 15 साला लड़के को हीरो बना दिया, आफ्टर दिस चाइल्ड, ये बच्चा अदालत में जाके जज के सामने एक ज़हनी मरीज के सर में गोली मारी है, लोग उसकी वाह वाह कर रहे हैं, व्हाट द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. तो भाई ऐसे माशरे में इस तरह के हादसे तो होने और होते हैं और बार बार होते हैं. So why is it that I'm so angry about this particular video? There are two things. सबसे पहले वीडियो देखते ही मेरा दिल टूट गया, क्योंकि उस बेचारी औरत की आंखों में खौफ नजर आ रहा था. She thought she was going to die at the hands of her colleagues, at the hands of people that she's been working with. अगर वो बहुत ही लकी रहे, then she'll be the next Asia Bibi, locked up for 10 years until the Supreme Court realizes that there is no proof. There is nothing that you can actually take away a person's life for. ये हो सकता है. उसकी आंखों में मैंने ये खौफ देखा जो कि हमारे माशरे की माइनॉरिटीज ऑन अ डेली बेसिस फेस करती हैं. This fear of being second grade citizens, this fear of speaking openly your own prayers, this fear of wishing other people well in your own prayers and according to your own beliefs. कहीं गलती से कोई समझ ना ले कि मैं तबलीग कर रहा हूं. This fear
that any person can come and say tu gustakh hai, and that's it. That's the end of your life. If you're lucky, you will be in jail for 10 years and you'll be taken abroad, hidden, run away from your home and your family. Your family will be chased and persecuted. That's if you're lucky. Otherwise, if you're not dead, killed at the hands of an insane mob, you will be in jail, lingering, dying a slow, miserable death, like Junaid Hafiz. تو یہ جو اس خاتون کی آنکھوں میں خوف تھا, یہ مجھے آ کے لگا تھا, because I understand that fear. And I think it is inhuman, unacceptable کہ کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی طبقے کو, کسی بھی کمیونٹی کو اس خوف کا شکار ہونا ہو as a daily part of their lives, and that's the reality for them. So that made me angry. But the other thing that really tipped me right over, جہاں پہ میرا جی چاہ رہا تھا میں اٹھا کے کمپیوٹر جا کے دیوار میں ماروں, کہ JUI کہ کسی مولوی صاحب نے یہ اپوز کی ہے مائنورٹیز پروٹیکشن بل, کہ وہ نہیں اور بھی آلریڈی مائنورٹیز دے ہیو انپریسیڈنٹڈ ریلیجیس فریڈم ان آر سوسائٹی. ہاں وہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ بڑی ٹپکل بات ہے, ہمیں سننے میں آتی کہ نہیں ہماری مائنورٹیز بڑی خوش ہیں, اور نہیں بڑا خیال کیا کرتے, بڑی عزت کرتے ہیں ہم ان کا, بڑا یہ کرتے ہیں. What are you saying? There is nothing wrong. They are so happy. اور مزے کی بات یہ کبھی کسی مائنورٹی کے اپنے منہ سے یہ بات نہیں نکلتی, یہ ہمیشہ ان لوگوں سے کے منہ سے نکلتی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں everything is great. This disgusts me. How dare you مولانا صاحب, آپ ہو کون؟ آپ میجورٹی ریلیجن سے بلونگ کرتے ہو, ایک مذہبی پارٹی کے آپ ایک سربراہ ہو, آپ اس پارٹی کے ایک بہت اہم ممبر ہو. بھئی آپ کے ہاتھ میں ہے ہی ریلیجس پاور, آپ کو مائنورٹی ہونے کا کیا پتا؟ What the hell do you know? How can you understand and recognize the fear, the discrimination, the hatred جو کہ ہمارے معاشرے میں مائنورٹیز ڈیلی بیسس پہ فیس کرتی ہیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو ٹیمپل بننے دیا. ہاں ٹیمپل یوں ٹھا کر کے بن گیا, نہیں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوئی تھی, نہیں کوئی اس کو بند نہیں کیا, نہیں کوئی اس کو نہیں روکا گیا تھا. اور نہیں دیکھو ہماری مائنورٹیز وہ عبادت کر سکتے ہیں, ان کی عبادت گاہیں. ہاں بالکل ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے معاشرے میں تو کسی بھی مائنورٹی کی عبادت گاہ کبھی نہیں چلائی گئی, کبھی بھی نہیں ہوا کہ باہر سڑکوں پہ لوگ کافر 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 کے نعرے مار رہے ہیں. Oh no, but minorities are so safe, they're so happy, they're so great, they're so thankful that they're living in this society that gives them unprecedented freedoms. I'm disgusted with this complete denial of reality. ہمارے معاشرے کے مائنورٹیز چیختی آ رہی ہیں, whether it's forced conversions, whether it is oppression, exclusion from certain jobs, whether it is in our constitution کہ بھئی اگر آپ majority religion سے belong نہیں کرتے تو آپ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بن ہی نہیں سکتے, بے شک آپ کو ووٹ ملے ہوں. مائنورٹیز چیختی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی اس مولانا صاحب کی طرح کا کوئی بندہ آ کے کہو نہیں بڑے خوش ہیں سارے, اور نہیں لا میں نے تو کوئی آواز نہیں آ رہی, نہیں میں نے تو کبھی نہیں کسی کو قتل کیا. Who the hell are you? What the hell do you know? How dare you? کس منہ سے آپ ایک ہمارے معاشرے کے ہمارے ہم شہریوں کے ساتھ ان کی یہ آواز بالکل بند کر دیتے ہو, ڈینائی کرتے ہو, اور کہتے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کوئی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں, everything is good. I'm disgusted with this mentality. اب مجھے پتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کے بے شمار لوگ کہیں گے یار نہیں انڈیا میں ایسے ہوتا ہے, UK میں ایسے ہوتا ہے, US میں ایسے ہوتا ہے, یورپ میں ایسے ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے. انڈیا میں مودی اور اس کے ہندوتوا نٹس جو بدتمیزیاں, غلط حرکتیں, جو پرسیکیوشن کر رہے ہیں مسلمانوں کی, ہاں مجھے معلوم ہے. میں ان سے بات کر رہا ہوں, ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, ہم سے بات کر رہا ہوں, اپنے ہم وطنوں سے بات کر رہا ہوں, اپنے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں سے بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ہمارے پاکستانی شہریوں کی بات کر رہا ہوں. Who the hell cares about India in this situation? It is not relevant to our society. اور بھی یورپ میں وہ دیکھو رائٹ ونگ پارٹی ساری نکلی, ہاں نکل رہی ہیں, میں ادھر رہ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے. I understand how disgusting that mentality is. What the hell is that as an excuse for what we do to our minorities?
रोहिंग्या मारे गए बेचारे बेचारे रोहिंग्या. हाँ, that persecution and genocide of an entire population, it's a war crime. What the hell does that do to justify the discrimination and disrespect? और जिस तरीके से हम अपनी minorities को completely side पे कर देते हैं, how does that justify it? जिस religious arrogance के तहत हम लोगों को कत्ल करते हैं, उनकी गर्दनें काटते हैं, बम फाड़ते हैं. What does that have to do with the Rohingya? What does that have to do with Muslims in India or the Muslims in Europe or with anyone else? That is our fault. ये हमारी बीमारी, ये हमारा मसला है. ये हम जुल्म कर रहे हैं अपने हमवतनों से, अपने शहरियों से. So don't give me this stupid whataboutery कि इधर भी होता है उधर. हाँ होता है. That's not what we're talking about here. We're talking about our society and what we're doing wrong to our people. ये मसला दीन का नहीं है, ये मसला है ठेकेदारों का. ये मसला है उस ज़हनियत का जिसने आम लोगों को भी कन्विंस कर दिया है कि भाई तुम हकदार हो अगले इंसान की जान लेने के. अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे दीन या ईमान पे जरा सा भी हमला या कुछ भी तुम्हें बात बुरी लगे, तुम जाके कत्ल करो, कोई मसला नहीं है, तुम्हारा हक है. ये ज़हनियत है मसला, दीन का मसला नहीं है. और आप में से यकीनन वो भी लोग होंगे जो कहेंगे भाई यार दीन का पे हमला, कोई दीन पे हमला मैंने नहीं किया. ये दीन का कसूर नहीं है, ये मेंटालिटी, ज़हनियत का कसूर है जो कि लोगों में एक गरूर पैदा करता है, एक इंटाइटलमेंट पैदा करती है जो कि लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला रखता है कि भाई तुम हकदार हो अगले की जान लेने वाले. ये बीमारी है, ये जहर है हमारे माशरे में. इसको गायब करेंगे तो दीन की शान बढ़ेगी. जितनी देर ये ज़हनियत हमारे माशरे में नॉर्मलाइज होएगी, जितनी देर इस तरह की वीडियो सामने आएंगी, जितनी देर हमारे माशरे की माइनॉरिटीज की रियलिटी, उनकी हकीकत को डिनाई किया जाएगा, no, we don't get the right to say anything.